मैं इसको देखें, एथिज्म इज अ प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजी, नॉट थियोलॉजी, याद रखिए। जस्ट लाइक दैट दिस जेंडर कंफ्यूजन इज अ प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजी। और किसी भी नॉन साइकोलॉजिस्ट से, दुनिया के गोरे से, बेशक जिस स्वीडन का ही क्यों ना हो, स्वीडन का ही क्यों ना हो, वो भी आपको बता देगा। MIT की अभी रिसर्च पढ़ लें आप, अभी स्वीडन की मैंने तो नहीं की ना, किसी देसी ने तो नहीं की, मुफ्ती तकी उस्मानी की रिसर्च तो नहीं है ना। दे देमसेल्फ सेड कि भैया देयर इज नो गे जीन नाउ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस, इट्स नॉट जेनेटिक। इसका क्या मतलब है? योर मदर स्क्रूड अप बडी और योर डैडी। कैसे बोला? बचपन में कोई हुआ मिस हैंडल हुआ आपका? इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, इट्स नॉट माय ओपिनियन। अभी ऑफ कोर्स आई न्यू इट वाज द वे इट इज, हम तो साइंस का स्टूडेंट हूं, बट नहीं, उन्होंने बस लगाया हुआ था, नो योर बायोलॉजिस्ट, यू know, neurobiologists, you doctors, you guys don't know anything. I'm a doctor myself, and I am a woman in a man's body. Okay, I get it. There's a medicine for it. Yeah, there is a medicine for it. No, it's not a joke. It's a very serious matter for those people. उनके साथ बचपन में मैं कॉन्फिडेंस लेवल 95% के साथ ये क्वेश्चन रन कर चुका हूँ। मेरे पास सैंपल है ना, ठीक है, और आप भी करके देख लें। जब भी आपको जेंडर कंफ्यूजन में बच्चा मिलेगा, आप उसका थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करेंगे तो चाइल्डहुड डिसऑर्डर। सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी समबडीज फॉल्ट। यू डू नॉट प्ले विद साइंस लाइक दिस। कहने जी मैं आई एम अ वुमन इन अ मैन्स बॉडी, वेल वी आर गोना ट्रीट द बॉडी नॉट द वुमन इनसाइड यू। ये इस्लाम ने भी कहा, जाहिर पे ज़रूर लगाएंगे। There are only two genders. If you are apparently a man, it doesn't matter if you're a woman is stuck inside you. Even if there is a gender dysphoria, literally, biological dysphoria, तब भी apparently you're a man, you're a man. आपको तरका inheritance भी वही मिलेगा। 26,000 गूगल करें, कुछ स्टैट्स बताएं, मैंने नहीं निकाले। 26,000 केसेस पहले दिन रिकॉर्ड हुए पाकिस्तान में। ये जो कह रहे हैं ना, नहीं ये फैक्शन है, फ्रिंजिस के ऊपर ये मामला होगा। 26,000 नॉन केसेस रिकॉर्डेड जिन्होंने अपना जेंडर एक्स करना है। रियली आप लोग कह रहे थे कि हाँ हमने सिर्फ ख्वाजा सराओं के लिए प्रोटेक्शन के लिए बनाया। इतने ख्वाजा सरा छुपाए हुए थे अपने अपने घरों में, अचानक निकल आए। वो तो पहले से ही ख्वाजा सरा थे। पहले दिन 26,000 केसेस रजिस्टर, वेट कर रहे थे कि कब ये लॉ आएगा। और ट्रस्ट मी, आई नो हाउ द गेम इज प्लेड। आई बीन इन प्लेसेस, आई लिव्ड इन प्लेसेस वेयर दिस गेम वाज प्लेड 50 years ago. You think there's a stop to this? No. So I'm not worried about these people who are like 50-year-old women stuck in men's body. I don't care about them. But I care about it. तो बेचारे 5 साल के बच्चे का क्या कसूर है? आप फिर कहते हैं कि इस्लाम का कार्ड ना खेलूं मैं। इस्लाम के अलावा कोई कार्ड आप मुझे बता दें उस वेट का तो मैं खेल। साइंस तो आप मान नहीं रहे, इस्लाम से आपको वैसी नफरत है, तो कोई तो कहीं पे तो आए ना। एंड आई एम ओके कि आप वुमन स्टक इन अ मैन्स बॉडी, आई गेट दैट, आई गेट इट, बट डोंट मेक अ लॉ आउट ऑफ इट। टुमारो इफ आई फील लाइक आई एम लायन, देन आई वांट टू ईट यू अप। I feel like it. There's a lion stuck in a man's body. Yeah, where's the, or you know, better yet, I am still 18. I feel like I'm 18. Who's to stop? कहां से लिमिट कर रहे हैं आप इस चीज को? जैसे ही अबू जी फोत होंगे, I feel like you feel like a man, go back. Inheritance पकड़े. Better yet, go to the Olympics. Boys, you. विमेन ओलंपिक्स, कोई गोल्ड मेडल पाकिस्तान में तो आए। और अगर आप लोग अब पाकिस्तान में गोल्ड मेडल ना लेके आई तो कोई फायदा नहीं इस लॉ का, कोई तो फायदा होता। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट को ज्वाइन करें, इंडिया पाकिस्तान मैच में मजा आए। भारत तो नहीं जीत रहे ना।